Yeah, sure. So Thank you. thanks. Thank you. So, why I am talking about this is the main point, because technology post COVID, if we see, is has changed every sector altogether. Okay. So, being a techie, first of all, let me introduce myself. I am from Pune and I am a techie. I worked in technology sector for almost 19 years. So, I understand technology much more than most of you guys, and how we can use technology into various sectors. So I worked with tech industry. I'm having a specialization in data center and in IT infrastructure. So when I transitioned to real estate and financing almost 5 years ago, I saw a huge gap wherein still people are using the old age technologies, okay, or old age methods. So I thought, why not we should use some technology to connect with people. Okay, so technology is an enabler. Technology will not do all the things for you, but technology is an enabler. That's what we need to understand. Okay, so not pressing more about me. Most of you guys already know me. Okay, so I am going to the agenda of this particular session. Okay, so what we will be covering during this session is, first of all, introduction to technology in real estate, how technology can help us, what are the different tools which a real estate professional can use. Okay, what is the CRM system, what is their role in our real estate journey. Okay, apart from this, what is virtual tour, we have heard of it many a times, how this can be a game changer, how property portals help us in enhancing our property discovery, and then overall, we will sum up with the benefits of technology in real estate, and we will be open for any question and answer thereafter. So, here is the first thing. So, post COVID, if you remember, most of the people were getting lot of calls, not only with respect to the real estate thing, anywhere cold calling was the most prominent area. Other things were newspaper ad hoardings and all, which is still happening. But now, to reach most of the people or many people, we require digital thing, which is social media, digital marketing tools, or any other things by which we can reach more people than whatever we were earlier reaching to. A telecaller, when calls, can call to a maximum of 200 or 300 people. If I give an advertisement on the newspaper, it will reach to multiple people, but chances of people seeing it is then very limited, and we can't measure it. Okay, how many people have seen it, and how what is the conversion ratio. Similar is the case with the hoarding. So guys, I'm not saying that these are not required, these are still required, but to reach people in faster manner, we require more the digital way now. Okay, so with digital marketing or social media marketing, we can reach more people in a shorter time, so which effectively give us leverage give us the leverage to increase our business in a short span of time. Okay, so this is how. And post COVID, if you remember COVID ka time, तो COVID के time में most of the people were not even taking newspaper, because कहीं पे touch करना and all things are like difficult, है ना. So all things are closed, so hoardings कौन देखने वाला है, like है ना. Then how telecaller will come to your home. So the only way which evolved during COVID was the digital technology. And post COVID, this is adopted by many of the sectors, and similar with is the case with the real estate sector. And the first thing which I will try to cover today is the digital marketing tool or social media. Okay. So this is one of the game changer. If you start using this, you will certainly, as I earlier mentioned, you will reach to more people, and you can do proper targeting also, which is again a drawback of the traditional marketing. You can't target लोगों को ही दिखना चाहिए, जो बंदा है ना ऐसे इस एरिया में रहता है, या इतना इनकम है उसका, या इस तरीके का लाइफ स्टाइल, यू कांट डू इन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग. हाउएवर विद डिजिटल मार्केटिंग्स यू कैन टारगेट योर ऑडियंस, कि भाई इन लोगों को ही दिखना चाहिए, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, यहाँ तक ही पहुंचना चाहिए. Now coming to the CRM, which is my topic today. So how CRM helps us? Okay,
The earlier ways of doing things was, okay, if you remember, एक बही खाता एक excel sheet होता है, okay, you keep a notepad with you and you make all the notes. So you are making 200 calls or 100 calls in a day and you are making note of all these things, okay, and then the next day you are having another target of reaching that another 100 200 numbers, and you forget what happened yesterday or what happened 7 days before, a week before, a month before, you forget. And there may be chances there is where customer has given told you that please call me on 7th of the feb, and you forgot because you have new work to do. However, with crm systems, if you have implemented it properly, you have all the records in one go. Okay, you can do client tracking, even you can have a automated follow-ups. Okay, and apart from this, you have a relationship management tools in the crm wherein you can use your crm as a tool wherein you can send them messages on a frequent basis also. So this is a major use of crm. Apart from this, crm gives you complete database of your real estate journey. So once you have implemented the crm, you can understand how much I spent, how much I have spent till now in this particular project, from which particular source I am getting much better results, and by which marketing I am getting no result, and should I continue this marketing or should I avoid any of this marketing. So crm is something which can give you complete insight of your business as well as give you the future trend how you should run your business. Okay, then the game changing thing came in during covid time, which is virtual tools. Because what happened during covid times is most of the people were not able to visit the site because of the obvious reasons. Okay, then the technology came, and technology has helped us to do the walkthrough of these people through a virtual tools. Okay, so augmented reality experiences are created, 3D walkthrough have been created so that people sitting in one of the area which is a remote area and not going to that particular site can see each and every corner, how it is look, how it look like. Okay, what is the neighborhood, where is the amenities and all, through a virtual tour itself. Okay, and this became the game changer. And if we try to adopt these technology, this will also help us into creating the more business for us. Okay, use of property portal is again one thing which we will discuss in more detail how these are helping us. But before using the property portal, there is one more use which we can use via property tool portals, is the market analysis. So if I ask you what are the major property portals in India, so ideally the three top portals are 99 acres, housing.com and magic bricks. And if you go to these portals, they will give you market analysis also. भी दिखाई देता है वो how the price ranges, price increases in last few years in this particular area. If you search complete Pune, I am from Pune. Okay, so if you go to Hinjewadi wala area, so these are the market analysis tools. Okay, how many people are going there, and they are paid services also from some other portals which can help you in market analysis. And depends on this market analysis, we can design our strategy. Also, there is one good thing which happened is the mobile application. So now even as an experience, we are also having many mobile applications with us. Okay, so this helps us on the go access to all the things, and we can even while traveling we can, or even at some site and not having laptop with us, not carrying laptop, we can update all the things and we can have all the client information on our mobile. Okay, so going ahead, so what are the digital tools which we can use? The first thing is for sure online marketing. Marketing is something which is very much essential for all the business, and for real estate also it is very much essential. So most of the people think कि भाई we have taken the license and then things will go and things will work for us. But yeah, for sure, if you want to run your business, so there is a what I know. Okay, if you want to have a X revenue, okay, you should be having 20% of this into your marketing. Okay, so anyone wants to generate a revenue of 3 to 5 lakhs rupees. If someone wants to generate a revenue of 3 lakhs rupees, ideally
20% of this should go to marketing. Okay, and online marketing is one of the best tool where you can either use the meta ad platform, which consists of Facebook or Google, Facebook or Insta, or if you know that this project is having very much hype, and you can go with Google ads also. You may try with LinkedIn ads also, but we have tried LinkedIn ads, and somehow Indian market doesn't. We saw that Indian market doesn't fit for LinkedIn, because most of us go to LinkedIn for a limited time and mostly to see some of the update. And even in my career, I haven't not clicked any ad in the LinkedIn. However, for sure, Facebook and Insta are the platform where we go and we see lot of ads, and sometimes we click on these ads. So depends on your taste. You can certainly try, but what I used, I will cover that particular thing. So Facebook is something of a platform, Facebook or Insta, which is a meta platform, which you can always use, one of the best platform. And then they are having one more platform, which is a WhatsApp. They have recently, few years back, acquired WhatsApp. So WhatsApp is something which is, if you will not believe, the average response time of WhatsApp is 90 seconds only. 90 seconds. Okay. So, and the open rate of WhatsApp versus email. So if I talk on this particular thing, so WhatsApp open rate is almost 98%, and email open rate in India, because we Indians are not so email savvy also. So I'm not talking for all the people. I'm talking generic. Okay. So the email open rate is 2% in India. However, WhatsApp open rate is 98%. So I personally use WhatsApp marketing most of the time, and I saw great result in real estate from this particular thing also. Okay, Correct. going back True. to another things like the market analysis. Okay, so market analysis, if you want to do, okay, so either you can go to the Magic Breaks, 99 acre housing.com, or Prop Tiger. Otherwise, you can have a professional report. These are paid reports, by the way, which is from Analog, JLL, CBRE, or Knight Frank. These type of they give a great professional report on real estate trends, what is happening in different cities, what are different investments, and demand and supply analysis. Based on this, you can also design your strategy to work on which particular area. Okay. Apart from this CRE metrics and prop stacks, there are also analytic driven insight for commercial and residential real estate. So based on this, you can create again your strategy. And if you guys know, we are also having a tool called Flow. Okay, so if you are part of eXp, there is a tool called Flow. Okay, you can use this Flow. If you don't know how to do meta advertisement, which is a Facebook or Instagram advertisement, you can simply go to the Flow tool and subscribe to that particular tool. Yeah, there is some cost, but you need not to know how to do Facebook marketing, Facebook ads and all. You can run via this. Okay, you can select one of your listing, and then you can post all other details, whatever you want. You can even select the targeting audience also, which type of audience you are looking for. Okay, so that is the tool exp is providing us. So this is something I think which each one of you should try. Okay, now the time 2024 started, and this has changed the world altogether. And everywhere if we go, we hear a word called AI, AI, AI. Okay, so AI is nothing but a artificial intelligence, and you can use it for your betterment also. So I'm not saying that AI will do all the things. Okay, but then if you want to create any content, yeah, we are having AI. You can use Chat GPT or Gemini or any other tool which you want to do, but I prefer Chat GPT. I'm used to it. Okay, so you can do target audience also from Chat GPT. Again, a wonderful tool. You need not to pay. If you pay, you will get much better result. But if you are even having a trial subscription of this particular thing, it will work for you. Most of the cases I have seen that if you see any advertisement, most of the people use the images or videos shared by the developer, and all these images are having similar look. Okay, so what happened is CPL get increased, and सभी को वही पे तो दिखाई दे रहा है. So what you can do is, even that is the artistic image only. So with
AI tools, like one of the AI tool from Adobe Firefly, you can use, and you can create image also, depend on your requirement. Okay, so if you are selling something, okay, give some idea. You have multiple choices. You can ask, create, give some inputs, and it will create the image for you. Based on this image and whatever content you have created, you can create your infographic also. So this is wonderful tool, or wonderful support from AI which we can do. Apart from this, most of the people wants to do create video, and then they feel, अरे यार इसमें तो बहुत टाइम लगता है वीडियो एडिटिंग करने में and all. So what you can do is you can use again the tools for AI tool called captions.ai, or there are multiple tools, but we are using captions.ai. Okay, so what it can do is it will do the video editing for you. उसमें जो भी captions है, that will add for you. So these are the things which can be done by a digital tool. Okay, now coming to one of the major gap which I have seen in the real estate industry, कि होता क्या है, लीड कहीं पे आ रहा है, कम्युनिकेशन कहीं पे हो रहा है ना, शीट कहीं पे अपडेट हो रही है, रिपोर्ट मांगा जाता है, तो उसके बाद में पीपल आर, अभी तो वी रिक्वायर सम टाइम कि अब क्या हो रहा है, मेरे विजिट कितना हुआ है. बट दिस ऑल कैन बी डन विद अ सिंगल टूल कॉल्ड Pabbly. देयर आर मल्टीपल टूल्स. Pabbly is the Indian version of Zapier. Okay, and very cost effective. Even it give 100 connects per month for to you for free. Okay, if you want more connects, there will be some charges. So you can go for this, and you can connect. So Kumar, sorry, Yeah. so just for everyone's understanding, guys. So these are the automation tool. अगर automation कैसे होते हैं, like for example आपकी मेल पे कोई मेल आ रहा है या आपके मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, राइट, आप उसको चाहते हो कि कोई लीड आ रही है रियल टाइम, तो यू कैन इंटीग्रेट एंड यूज दीज ऑटोमेशन विच इज वेरी इजी टू डू. थोड़ा सा सीखा, वीडियो ट्यूटोरियल्स देने पड़ते हैं, बट दिस विल मेक योर लाइफ स्मूथलेस. लाइक इट इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ, जो आप मैनुअल काम करते हो एक्सेल्स में डेटा डालने का, कॉपी पेस्ट करने का, वो सब आपका बच जाता है बाय यूजिंग दीज टूल्स. और बैक टू यू कुमार. या थैंक यू शशांक जी, थैंक्स फॉर एडिंग दिस, है ना. तो शशांक के टूल्स है ना इंटीग्रेशन के लिए, कि हमारा काम आसान कर देते हैं. एक फेसबुक में मान लो कि लीड अभी जनरेट हो गया है, आप उसको चाहते हो कि उसको है ना गूगल शीट में मुझे डाल देना है या CRM में डाल, हमको एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, 5 मिनट लगता है. बट हाँ, जैसा सीखना पड़ता है इनिशियली, थोड़ा टाइम देना. 2-5 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट लगे उस काम में, वो देखने के बाद में हमने कर दिया, तो ऑटोमेटिक है ना मेरे शीट पे चला जाता है. देन वहां से मुझे क्या, उसको व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए, दैट कैन बी हैपन, है ना, कि उसको एंगेजमेंट मैसेजेस जाते रहे. मतलब आज उसकी लीड जनरेट हुई ना, 5 दिन के बाद में उसको एक मैसेज जाना चाहिए व्हाट्सएप पे, या उसको मेल जाना चाहिए. सो all this can be done with integration tool, and we can integrate these tools to WhatsApp API also. अभी आजकल फेसबुक ने ऑफिशियल व्हाट्सएप API भी कर लिया, तो उसके थ्रू भी आप है ना कंटिन्यूअस मैसेज भेज सकते हो, और आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा इफ यू आर यूजिंग द ऑफिशियल WhatsApp API. So there are two types of WhatsApp API comes into market, the official one and the non-official one. Both you can try and use. Okay, I'm going ahead. So more on the CRM part. Okay, so CRM systems, as I earlier also mentioned, these are something which help us in customer relationship management, starting from the lead generation, the marketing, whenever we start with the marketing, and then the closure of the deal. Apart from this, even सी रियल एस्टेट में कैसा होता है ना, कि ऐसा नहीं होता है कि एक बंदे ने अब कभी नहीं लेगा. आई वॉज रीडिंग अ बुक, और उसमें वो बहुत अच्छा बता रहे थे फ्रॉम वन ऑफ द फेमस राइटर. ओके, वो कहते हैं कि मैंने मेरी जिंदगी में 33 कार लिया, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी सेल्समैन ने 2 बार कार बेची. Why this happened? Because no one was tracking. एक बार इवन इन द रियल एस्टेट सेक्टर, एक बार जो लोग लेते हैं ना, वो बार बार वो क्या करते हैं कि हम लोगों से कनेक्ट कई बार नहीं कर पाते. सो CRM will keep your audience or customer engaged, and that's how you can be selling them multiple times in their lifetime. Okay, so there are multiple CRMs in the market. Salesforce is the biggest one. Okay, जिसको हम लोग कहते हैं. Apart from this, there are multiple CRM, but then we are having a special CRM which is Lead Plus. And why I'm saying that special CRM, because this is made for real estate. So what is happening with Lead Plus is
रियल टाइम हमारे को है ना, एक तो व्हाट्सएप पे लीड आता है, जैसे ही लीड जनरेट हो रहा है ना सिस्टम्स पे, हमारे को रियल टाइम लीड आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी मैचिंग, मल्टीपल थिंग्स. सो आप उसमें है ना इवन रिमाइंडर लगा सकते हो कि भाई इस कस्टमर को कॉल किया, इसने फरवरी को 2 बजे कॉल करना है. यू कैन सेट अ रिमाइंडर. या फिर आपका कॉल नहीं उठाया, आप चाहते हो कि इसको है ना मेरे को नहीं उठाया ना, तो मैं 3 दिन के, यू कैन सेट अ रिमाइंडर एंड यू विल गेट अ पॉपअप एंड यू कैन कॉल देम. सो विल यू विल नॉट लॉस लीड, इट विल नॉट लीड टू लॉस ऑफ योर बिजनेस. मतलब एक बार लीड जनरेट हुआ, हो सकता है भाई वो मीटिंग में हो, कहीं बिजी हो, नंबर उस वक्त रीचेबल ना हो, नहीं उठा पाया, वॉट एवर इट इज, you can reach them and you can get good business out of the leads what you have generated. Okay, so this again leads to increase of your productivity, better client relationship and higher closing rates, because now your clients or customers are more engaged with you. Okay, so as I already mentioned, virtual tools. So now if you go to most of the luxury projects, you see they are not preparing the sample flat and all, they are giving something AI thing, virtual tool उसी में से करा देते हैं, and people are feeling like अरे ये तो मैं उसमें होके आ गया, because यहाँ से पूरा 360 व्यू दिखाई देता है. तो there are two types of virtual tools, which one is the URL based tools, URL based, जहाँ पे आप एक यूआरएल देते हो, उसमें से आप दिखा सकते हो व्हाट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, वहाँ पे क्या एमिनिटीज है, वहाँ पे 3 BHK है या 4 BHK कनेक्टेड है, ऑल द थिंग्स आर देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ वीआर वाला थिंग, ओके, विच इज मोस्टली अवेलेबल एट द साइट. तो वहाँ पे साइट पे जाके उसको दिखाते, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके इस तरीके से करते. तो 360 डिग्री कैमरा को लेके इसको यूज करते. दिस इज अगेन गुड टूल. तो इफ यू आर हैविंग सम एक्सक्लूसिव लिस्टिंग, आप उसके लिए ऐसा बना सकते हो. सो इफ पीपल आर नॉट इवन able to come to your site, you can use this technology so that they can have view. Okay, and once they have view, उनको अच्छा लग रहा है, तो chances of coming to your site and having a closer is much easier. Okay, and you will see good conversion ratio also with these virtual tools. Okay, next to the property portals. So as I earlier mentioned, so property portals are something where we also use eXp gives us a leverage to use 99 acres and housing.com, okay, where we can do our listing in our REP platform, and then eXp backend team from eXp post these listings into 99 acre and housing.com. Now a very recent feature which amazed me, I think some 4 or 5 days back, introduced to us, which is a AI listing from 99 acres. So if you are having a video, all the things will be written to that particular thing what you want, and then it can also having a geo tagging, so customer can get a location also. So उसमें क्या होता है, location mismatch हो रहा है, that will not happen. And if a geo tagging is also happening and AI listing is there, so chances of getting more customer interested to you increased. Okay, and similar thing is with housing.com also. So housing.com gives you more neighborhoods insights also, apart from 99 acres. So both are having their pros and cons, but both are having both good portals. Okay, and we can use this. Even if you go inside the 99 acre or housing.com or any other of these, you will see lot of reports. Okay, so I am from Pune, so if I can see area is in more demand, what is the market rate in this particular area, I can find out from this. What was the price in 2021, how it increases in 2022, now what is in 2023, and this will help us in giving more insight to our investors or customers कि भाई इस तरीके का ट्रेंड हुआ था, है ना, आपको ऐसा हुआ था, तो आप आगे समझ सकते हो कि इस तरीके से होगा. Because see, we can't see future, but we can forecast what is going to happen. Okay, so that's how this market forecast can help us in giving more insight to our customer and give us leverage again for more closer from the customer end. Because customer को देखो दो होती है, एक तो रहना होता है, और दूसरा उसको ये भी समझ में आता है कि भाई मेरा उसका है ना इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका प्राइस भी इंक्रीज होना चाहिए. तो इफ यू कैन गिव दिस टाइप ऑफ इनसाइट्स from this portal, taking help from this portal, this will certainly give more closures to us. Okay, so now I'm on the last slide, which is
what will happen if we start using technology in real estate? For sure, this will increase our efficiency, because many a times whatever we were doing in almost 40 hours in a week, okay, we can do it in 10 to 12 hours, okay, because most of the things are now automated. Only thing is we need to monitor it and we need to push it. So one of my friend always say that AI is not AI will not replace you. The formula is HAINH. H is human. Human need to put the input. Okay. 70% of the things will be done by AI. Then again, the remaining last thing is again, which is as a human we need to do. We need to see whatever AI is given is right or I need to change something. Okay. So it will certainly increase our efficiency. Okay. Okay. Second is that it will also improve client experience. So using different type of automations. Okay. So I have seen like WhatsApp automation. What most of the people ask is, भाई मेरे को layout दे दे, क्या layout है, या you can automate all these things. So client will not go to another एरिया. ओके, जैसे ही लीड आई आपको उसका एक मैसेज चला गया, वेलकम, और फिर उसने मान लो कि आपने जो भी प्रॉम्प्ट बोला है वो डाल दिया उसको ब्रॉश. सो व्हाट यू आर डूइंग इज, इंस्टेड ऑफ he was surfing in Facebook or Insta and going to another ad itself, you are engaging him, है ना, and you are improving client experience. तो अभी आया तो आप कब उसको मिलोगे, कब उसको भेजोगे, I don't know, but with this the client experience will increase. You can also broad your market reach. So sitting in Pune, I can do digital marketing in any part of world, okay, and I can attract customer from any area, but physically it is not very much possible. So or I need to hire lot of team if I want to do in that particular area. Okay, so market reach is increased with the data. What we discuss, we can take proper decision based on the data, and also the cost is very much reduced. So these are some benefits which we can have with the technology in real estate. Anyone wants to add something? I think I was hearing someone was asking. Yeah, so Kumar, I think one brilliant example is using our CRM Lead Plus to set up the site visits, updating the feedback, राइट. सो जैसे ही आप साइट विजिट करके आते हो, उसमें आप जैसे ही अपडेट करते हो तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप से मैसेज चला जाता है कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, है ना. और अगर आप चाहो तो उस पर एक फॉलो अप रिमाइंडर 2 दिन बाद का भी सेट कर सकते हो. तो ये सारे टूल्स हमारे सीआर. दूसरा, जैसा आपने बोला कि आप पुणे में बैठ के ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केटिंग कर सकते हैं, एंड आई थिंक वी हैव सीन इट a success also. There's a agent named Dheeraj Wadia. उन्होंने वो करके दिखाया था. 39 transaction he closed, revenue about 70 lakh rupees in 2.5 years, where he tried to reach out to the buyers and sellers in United States and connected them back to eXp agents in US. Without even traveling to US, he's able to sell properties over there, take the mandates of the property over there, and earn a referral commission. Referral commission में उन्होंने मोटा मोटा 39-40 lakh rupees, I think 24 में. So that is a crystal clear example how one can work smartly, use the technology and increase the business. So we have Lead Plus already. We have our other CRM, which is a global CRM, but Lead Plus is what we are using. So all the listings what you do, leads हमारी XP के अंदर. तो that's it. Gaurav ji, go ahead. So thank you Shashank ji for adding this. And yeah, I still, so I also know Dheeraj personally. He has closed a lot of deals, and what he has done is he told me a bit of it. He has taken a virtual number of that particular country, and he was doing all these things sitting in Pune and selling property in US. So this is how technology can help us. Okay, however, without technology, if we want to do this, there is a hell lot of challenge which we may face. Okay, so yeah, so concluding my slide, the future is digital, so we need to adapt, है ना. There is a great speaker called विवेक बिंद्रा. वो कहते हैं या तो आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना लो तो आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, अदरवाइज आपका बिजनेस पता नहीं, है ना. एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी what is happening in the market also, not only in real estate, every market, है ना. पहले है ना जो लोग ओला उबर पे नहीं शुरू हो चुका है, 27% 30% उनको देने के बाद में भी उनको अच्छा खासा वो मिल रहा होता है. सो फ्यूचर इज डिजिटल एंड वी नीड टू अडॉप्ट. वी कांट से कि भाई इसके बिना हम लोग, हो सकता है 1 साल 2 साल कुछ टाइम चला ले, बट द फ्यूचर इज डिजिटल. So key takeaways from this particular sessions
are like we need to use start using the CRM systems, which is the Lead Plus, which is already provided by EXP without any cost to us. Okay, then should start using virtual tools. Okay, we are already having subscription to portals, so we can start using these. Okay, and the call to action is integrate new technology into real estate. Okay, like I mentioned AI, so we should start, even EXP is giving access to AI to us. Okay, we can use our AI tool also, which will helps us in creating the content also. So you can start using, we all can start using this. Okay, so now floor is open for question and answer. Thank you for listening to me, and thank you, Shashank ji, for adding your valuable inputs during this session. Thank you. नहीं सर, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा सर, काफ़ी सारी चीज़ें इनपुट्स आपने जो शेयर किए हैं रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, सीआरएम टूल्स, एंड आई नो योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, फॉर यू, मतलब कमिंग फ्रॉम आईटी, हाउ डज ईएक्सपी सपोर्टेड यू? एंड मे बी इट्स अ बायस्ड क्वेश्चन अबाउट ईएक्सपी, बट बीइंग फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, हाउ डू यू सी इट? Because coming into real estate, then working in this brokerage, so how does it actually help you from IT background? And how do you see yourself, your growth in re-exp reality in last 3.5, 4 years, for whatever time you have spent with us? Yeah. थैंक यू शशांक जी। तो लॉग इन किया ना, तो मेरे को एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर थर्ड एनिवर्सरी इन EXP। ओके, सो आई कंप्लीटेड 3 years एंड व्हेन आई स्टार्टेड रियल एस्टेट, सो आई वाज वेरी, काफी डर लग रहा था, बिकॉज ऐसा लगता नहीं कि काम अपन कर पाएंगे, है ना। अभी तक तो द फर्स्ट डाउट विद मी इज कि लोगों से कैसे बात करना है, एंड सेकंड थिंग इज कि भाई अपन करेंगे कैसे। बट द गुड थिंग विच I saw when I understood this EXP platform initially, so I saw lot of technology was used in this. Okay, तभी शायद हमारे पास लीड प्लस नहीं था, तब शायद इतने हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं थे 3 years बैक, लेकिन एक बहुत अच्छा टूल था जिसमें ना हम लोग वर्चुअली कनेक्ट, वेब बेस्ड हो गया, EXP वर्ल्ड करके टूल था, मेटावर्स प्लेटफॉर्म था। सो आई नो, बीइंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी फील्ड, डाटा सेंटर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को देखा, मोस्ट ऑफ दी इवन बिग प्लेयर्स आर नॉट हैविंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वाज वन ऑफ आवर कस्टमर दैट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग। वो मेटावर्स पे काम कर रहे थे, एंड वी एज अ EXP वाज ऑलरेडी हैविंग दिस वन, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच अट्रैक्टेड मी। Apart from this, I saw there are a lot of things, and the charges which EXP was asking was like कुछ भी नहीं ले रहे हैं, 2500 प्लस GST, मतलब। तो देयर वाज नो सेकंड थॉट कि इसमें आना नहीं है, एंड ऐसा भी नहीं है कि अपन, है ना, इसमें एक छोटे से बाउंड्री में काम करना है कि आप पुणे में हो तो पुणे में ही काम करोगे। बिकॉज बिफोर कमिंग टू EXP, आई स्टार्टेड वर्किंग विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई सॉ कि आप इधर ही कर सकते हो, उधर नहीं कर सकते हो। ओके, बट बीइंग इन IT, कनेक्ट कैसा होता है ना, हमारा तो सभी जगह कनेक्ट होता है। तो मेरा तो दिल्ली में हो, क्या करेंगे, तो EXP प्लेटफॉर्म दिखाई दिया कि यहाँ तो हम काम कर सकते हैं, वहाँ प्रेफरेंस दे सकते हैं। व्हाट धीरज हैज डन फॉर US, है ना, US में कर ही सकते हैं। सो दिस वाज द गुड थिंग। So being new to real estate, it took good time to me to understand what is real estate. Okay, और जो मेरे पार्टनर हैं अजय जी, उन्होंने मुझे इसमें काफी हेल्प किया था इनिशियली, अजय वर्मा जी ने। ओके, सो हमने उसको किया। फिर अब आई एम हैविंग अनदर पार्टनर निशांत, ओके, जो डिजिटल मेरे को, क्योंकि फेसबुक और ये सब मुझे उस वक्त नहीं पता था, एड्स एंड ऑल, बहुत हेल्प किया इन सब चीजों। हमारी ट्रेनिंग को रन कर रहे थे, उसको भी सीख रहे थे। एंड देन वी स्टार्टेड विद वन ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट इन पुणे। ओके, एंड हमने काफी अच्छा काम किया, बट समहाउ चैलेंजेस आए हमारे को बाद में। हम लोग ने फिर फोकस वापस वहां से निकाल के ये कर दिया, एंड नाउ अगेन कमिंग बैक, वी आर कमिंग बैक टू ट्रांजेक्शंस। अभी मैंने वापस फोकस ट्रांजेक्शंस पे किया है शशांक जी, एंड आई बिलीव कि मेरा जो टारगेट है इस साल का कि 50 लोगों का टीम बनाना है, जिसमें से एटलीस्ट 50% प्रोडक्टिव एजेंट होने चाहिए। This is my target for this particular year. कुमार जी, डेफिनेटली आई थिंक यू आर अ ग्रेट लीडर। आपने काफी टीम भी बनाया, एंड आई एम श्योर वो भी आप दोबारा से कंटिन्यू करोगे। आप और अजय जी, यू स्टार्टेड टुगेदर, एंड आई एम श्योर अजय जी इज आल्सो हियर। सो आई थिंक एक क्वेश्चन आया चैट के अंदर सर, दिस इज फ्रॉम विलेश, एंड ही इज आस्किंग, शेयर अ सक्सेस स्टोरी where the use of technology helped you to close a deal faster or more effectively. Do you have any instance? Yeah, should I share my screen or या verbally बता दूं मैं आप लोगों को? जैसे सर आपका मन है, चलेगा। So
last year when we are working in a project called Live Canvas. Okay, so I was running a ad which is a Facebook ad, but वो WhatsApp वाला होगा कि जैसे ही कस्टमर क्लिक करेगा तो WhatsApp पे हमारे को आता है, और वहां पे हमने WhatsApp ऑटोमेशन भी सेट किया हुआ था. तो कस्टमर ने लिखा, उसको ऑटो रिप्लाई चला गया कि आप इसके लिए ये क्लिक करो, वीडियो चाहिए तो ये क्लिक कर दो, 3D व्यू देखना है तो ऐसा क्लिक कर दो. कस्टमर ने सब देखा. 21st को शाम का कुछ टाइम था, क्लिक किया, उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि 8-9 बज चुके थे और एक लेडी थी, धनश्री करके नाम था, लेडी थी. तो हमें नहीं लगा कि हमको उसको अभी रीच करना चाहिए. अगले दिन हमने उससे जब बात किया तो वो लोग है ना 5 बजे आ गए, हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए साइट पे, और 7 बजे बुकिंग हो गई. आई थी हमारे पास में करीबन 8 बजे के आसपास में, और अगले दिन 5 बजे के आसपास वो लोग साइट पे आए और 6-7 बजे भी पूरा क्लोजर हो गया. तो विद इन 24 आवर्स वी हैव सीन इतना फास्ट क्लोजर भी हमने देखा है जब हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ. सो आई होप आई थिंक दिस हेल्प्स. जी. एक और आई थिंक So I किसी have a ने शेयर question. किया हुआ है, पी शर्मा बिलेश जी. आई हैड अ कस्टमर इन इंडिया हु वाज प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर हिज डॉटर इन कनाडा. By tech, I searched an active agent and completed the successful transaction through eXp. Okay. So Pankaj Sharma, if I'm not wrong, you are from Agra. So I think Pankaj, you can unmute yourself and you can also talk about this. My role was of workplace. Okay. Here. Good evening, everybody. Yes, go ahead, sir. Sir, basically, I had a customer when I was meeting a lot of customers here, doing the leads. So I met a customer who had a daughter who was studying in Canada, and this customer wanted to buy a property for her there in Canada. So when he contacted me and told me this thing, he said, "You told me something that you can sell property in outside India also. So can you search a property for me?" I said, "Yes, definitely." And then through workplace, I had searched an active customer in Winnipeg, and then subsequently active agent in Winnipeg, and then subsequently shared the address of the daughter of and the phone numbers of the daughter of this customer there in Winnipeg. And the agent and the daughter went along. They searched. They saw a lot of properties finalized, and subsequently that property was successfully purchased. And we could do everything here without moving outside my home. It was just purely technology use. Great. I'm sure there must be so many examples other agents must have felt in eXp. So guys, any other questions for Kumar ji? I mean, make it interactive. Anything, Kumar, Yes, sir. you want to add? I have a question, sir. Can I ask? Yes, sure. Yeah, please go ahead. Yep. So, Kumar ji, can you showcase how technology, basically AI, can help me create a customer persona or communication to customer, with the help of ChatGPT, maybe on your screen, please? Yeah, sure, absolutely. So let me share my screen once again. Okay, I need to stop the sharing first, and then let me share my screen. Entire screen ही कर देते. Just give me a minute. I am sharing my screen. So guys, presently I am running an ad for a project in Mamodi. Okay, there's a area called Mamodi का project है. तो मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए एक पर्सोना क्रिएट करना चाह रहा हूँ. ठीक है. सो व्हाट मेरे को कुछ इनपुट एआई को देना पड़ेगा. ओके. सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, क्रिएट कस्टमर पर्सोना फॉर a project in Mamodi by Yashda developer having 2 BHK starting from 68 lakhs and 3 BHK starting from 8 lakhs. Okay. This is the input what I had given. Okay. And let's see what are the inputs I am getting. Okay. So whenever you are doing this, okay, create 4 or 5 customer persona. ओके. सिमिलर थिंग नेक्स्ट करके हम करेंगे. तो यहाँ पे हमने देखा देयर इज अ गाय कॉल्ड राहुल मेहता, एज 32. तो हम 30-32 के एज वाला है. ऑक्यूपेशन मिड लेवल आईटी प्रोफेशनल और मैनेजर. ओके. ही इज मैरिड. तो हमारे को ये पता चला कि मैरिड लोगों को कर सकते हैं. ठीक है. यंग फैमिली को. इनकम ब्रैकेट भी हमारे को मोटा मोटा पता चला, और लोकेशन कहाँ पे रह रहा है. तो ये अर्बन एरिया ऑफ रिलोकेट होने के लिए देख रहा है या अपग्रेड करने के लिए देख रहा है खुद को, है ना. ठीक है. एजुकेशन देखेंगे तो बैचलर से मास्टर होगा, क्योंकि और आईटी में काम कर रहा है, बिकॉज मामोडी इज अगेन एरिया हिंजेवड़ी से काफी नियर पे हो, पास में ये. तो आईटी में काम करता है. तो वी कैन बेस्ड ऑन दिस कुछ पॉइंटर्स मिल गए अभी.
Okay, I will do next. Let's see what is getting. So if you do 4-5 times, you will see कैसा टाइप का हमारे को वो दिख रहा है. ओके, तो यहाँ पे आ गया अंजलि कपूर. तो मतलब हम मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं. एज 28 to 32. तो मोटा मोटा फिर हम 25 से 35 की एज ले सकते हैं. दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही प्रोफेशनल है, तो इसका मतलब कि डिसीजन मेकिंग भी दोनों हो सकते हैं. अगेन आईटी है ना, बिकॉज मैंने जैसा बताया इस एरिया में आईटी वाले ज्यादा रहते हैं. ठीक है, और इनके कंबाइंड इनकम अगर बात करें तो हाई टू मिड रेंज होगी होम लोन के हिसाब से. करियर बोथ आर एम्बिशियस है. फाइनेंशियल प्रोफाइल ये रेगुलर सेवर्स होंगे, ठीक है, या इन्वेस्ट करते होंगे. ठीक है, अभी इनका अगर गोल या मोटिवेशन है तो होम ओनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम वो देख. ठीक है, सो दिस इज द अनदर वन. Do one more. Okay, so with this you can create the customer persona. एक और हम कर लेते हैं. Okay, अभी हम 3 करेंगे and then we can decide on the. अभी देखो यहाँ पे 42 का एज भी आ गया, तो ये 42 वाला एज भी एक हो सकता है बंदा. तो इसका मतलब है कि अब मैंने 28 भी आया था, 32 भी आया, 42 भी आया, तो we will keep एज इस हिसाब से हम देख सकते हैं. वो सीनियर कॉर्पोरेट मैनेजर है या एंटरप्रेन्योर है, अपर मिडिल हाई इनकम में काम करते हैं. ठीक है, पुणे या यहाँ से हमारे को एक और कि मुंबई वाला लोग भी है ना मोडी में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज वो एक्सप्रेसवे के काफी पास में है. ठीक है, तो ये हमारे को यहाँ से पता चल गया. मास्टर्स की डिग्री है इसके पास में. सो दिस इज हाउ इफ यू डू 5 times ना, यू विल गेट मोर डिटेल्स व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स विल गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड डिपेंड्स ऑन दिस. जैसा मैंने पहले बोला ना कि एआई 100% नहीं करता, एआई 70% देता है. पहला ह्यूमन इनपुट हमारे को देना है और लास्ट में भी उसको कंक्लूड हमारे को करना होगा. So based on this you can create customer persona. Neeraj ji, I think this answers your question. Yes, sir. Very detailed. I mean, different kind of personas. Sir, in addition, could you also, showcase how to create or generate a photograph using this Chat GPT? Like what prompt? Okay. For this listing only, or for any other listing for that matter. Yeah. For example, no it's in pre-launch when the carousels are not shared by the builder. Yes. So, how can we make? So I am using a different tool which is by Adobe. Okay, Adobe Firefly. Sir, is this free, Firefly, or is it subscription? Something? Firefly by Adobe, है ना? So Yeah. if you go here, you can see AI image generator. Okay. Okay, you can click on AI image generator. ओके, जनरेट इमेज नाउ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, हिंदी हम लोग तो यहीं के हैं, तो आई थिंक दिस इज टेकिंग सम टाइम टू लोड. लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स. हाँ जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट लिखना है. ओके, सो ठीक है. एग्जाम्पल प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं. जो प्रोजेक्ट था हमारे पास में थेऊर. ओके जी. तो मैं लिखता हूँ क्रिएट एन इमेज फॉर प्लॉट इन थेऊर विद, वहाँ पे एक लेक भी था. Okay, 3 acre artificial lake surrounded by mountains and greenery, or yes by mountains and greenery. Okay, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम ये भी कर सकते हैं कि शाम को या सुबह है ना, जब सूरज उगता है या सूरज ढलता है उस वक्त काफी अच्छा हमारे को सीन लगता है ना. तो हम वो भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग इवनिंग टाइम. ओके, एंड make it realistic as it is taken by Nikon camera. Okay, let's generate it. So meanwhile, can it also generate a video, like a 10-15 second or a 30-second video? Or is there other tool? Yeah, there are other tools. Okay, wherein you can't generate video. However, what you can do is, अगर आपके पास वीडियो है ना, तो उसमें वीडियो एडिटिंग के लिए यूज हो जाता है. ओके, जैसे उसमें आप जैसे कैप्शंस लिख के आ रहा है या कुछ बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो ना, उसमें बीच में कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वीडियो एडिटिंग वाला काम हो जाता है. वीडियो के लिए भी टूल होगा, बट आई हैवंट एक्सप्लोर्ड एज ऑफ नाउ. उसके लिए भी होगा. तो आई थिंक एक और सर पावरफुल टूल है कैनवा. अगर आप कैनवा में जाएंगे ना, तो इफ यू गो टू कैनवा, कुमार लॉग इन टू योर कैनवा, तो वहाँ पे ना नीचे ऑप्शन आता है कनेक्टेड एप्स. ठीक है, ओके, इफ यू जस्ट लॉग इन टू योर कैनवा अकाउंट, जो eXp खुलेगा, आई डोंट नो, eXp वाला ही खुलेगा यहाँ पे. ओके, सो यू ऑलरेडी हैव अ प्रो अकाउंट. यहाँ पे आप एप्स पे क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, गो टू लेफ्ट हैंड साइड ऑन एप्स. ये जो लेफ्ट में है सर, जहाँ पे होम स्क्रीन है, ऑन योर लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स. सो इसमें ना सारी की सारी सर जितनी भी एप्स है, चाहे वो फोटो की है, चाहे वीडियो क्रिएट करने की है, एवरीथिंग इज देयर. कुछ फ्री है, कुछ फ्री एप्लीकेशंस हैं और कुछ पेड एप्लीकेशन है.
बट इस पे से ना आप थोड़ी सी रिसर्च Okay. करके एंड यू कैन एक्चुअली यूज इट. एंड गाइज आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी लाइक हेल्पफुल टूल. कैनवा के अलावा मैं कह रहा हूँ, चलो एडोबी सर ऑब्वियसली बेस्ट है, मार्केट लीडर है, बट फॉर बिगिनर्स, फॉर यू नो द पीपल हु आर इंडिविजुअल्स, उनके लिए बेस्ट है सर कैनवा यूज करना. By Canva only you can create a lot of I would say content around it. So for example यहाँ पे applications है, यहाँ पे all applications, यहाँ पे देखोगे आप AI powered पे क्लिक करो सर, नीचे थोड़ा ऊपर. Yeah, sure. Yeah. So the moment you click on that, यहाँ पे instantly create your video, you instantly create your captions. You can also translate your video English to Hindi, Hindi to Malayalam, Kannada, जिसमें आप चाहो. ठीक है. You can also add some music Amazing, on your amazing. videos. Everything is there, and these are AI driven. ठीक है. If you want to do some editable, there are some applications where you can submit your file, and the people can do it manually using different things. So these are some of the Amazing. applications which is not gonna cost you more than 1,000-2,000 rupees a month, or some are very expensive one also 5,000 maximum. So this is something which you can use it, create content in a month's time, and then you can start sharing it. So I hope this is going to help. very much, sir, very much. Sure, Not I will expecting that much. go through these particular tools also. इसमें जब ये जो अपने काम के वो अपन मैं देखता हूँ जरूर. Sure, thank So you. actually, this is for all. So Canva is anyways given by eXp for all. Correct. Enterprise Absolutely. edition, we all can go and create. Yeah. Correct. So here also, Absolutely, like what he absolutely. is using, like for example Adobe Express. So everyone is working on this. And guys, as I said, you really need to start using it. तो आपको टिप देता हूँ, you guys can create a PDF also for any new project which is coming up. जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है आप उसको बताइए. साथ ही साथ आप बताइए क्यों उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए. Chat GPT will create a slides for you, and then you can ask them to create a PDF format for the same. Then you can create. So but उसके लिए आपको थोड़ा like गौरव जी suggested, आप लोगों को सीखना पड़ेगा सबसे पहले. और जितना टाइम आप सीखोगे टेक्नोलॉजी को, डिजिटल को, then only you will be able to succeed. Any other question, guys? But great. Thank you, Neeraj, for asking this question. I think this is beneficial that other agents are also able to learn from it. How many of you have seen these things before? कितने लोगों ने ये सब चीजें पता थी कि चैट जीपीटी ऐसे भी बता सकता है, या फिर आप कैनवा पे जाके ये सब क्रिएट कर सकते हैं? हाउ मेनी डू यू नो? और अगर नहीं पता था तो आप चैट में लिख भी सकते हो कि नहीं पता. So thank you so much for sharing. So could you please repeat that question? आपकी voice break हो रही थी. Hello. या दीप, सो आई एम सेइंग कि Hello. जो चीज अभी कुमार और नीरज ने जो क्वेश्चन पूछा था, कितने लोगों को पता था ये चीज? हाँ, actually जो creating a customer avatar and using Canva तो I've been using for the past 2 to 3 years for creating creatives. And as a student of Kumar Amit sir, तो ये creating a customer avatar हमने वहाँ पे discuss किया हुआ है already. अच्छा, I had a question about the previous जो content अभी कुमार जी share. कुमार जी, जी. can I ask a question? Yeah, sure. I know it's a very basic question. जैसे हम लोग जैसे कई बार we get access to old data in the market in which we buy bulk data for like society wise or profession wise. So how do we, because it's a very, very, sometimes it's a very organized sort of data, but sometimes it's not that organized. So what software is best used to transfer that data to like the CRM or to basically for using bulk WhatsApp automation? So is there any tool so that we don't have to manually enter or manually do that, and it can just extract that data? And I got to know about a software called WhatsApp. Just give me a second. PowerChat CRM. I got to know about this software recently. PowerChat CRM, and so how do we integrate that into the system? Do you have any idea? So this CRM is WhatsApp API or what it is? Yes, this is WhatsApp API. Okay, WhatsApp API. Official one or कैसा non-official वाला? Yes, this is an official CRM tool. It's actually quite on the expensive side. But even if we use like the eXp CRM like Lead Plus, how do we basically extract the whole data into an automation software? Is there any tool to do that? नहीं, वो जो भी CRM में होता है ना, जो भी CRM होता है उसमें import का एक ऑप्शन होता है ना. So there are two types of tools. Okay, एक उनका फिक्स फॉर्मेट होता है कि मेरे को ऐसा फॉर्मेट में ही आप दोगे तो ही मैं करूंगा. Okay,
The other one are smart one which fetch the data. वो डाटा आप अपलोड कर दो, फिर उसमें से बताता है कि आपको इसमें से क्या क्या चीजें लेना है, क्या मतलब वो है, थोड़ा रूल आप वहाँ पे सेट कर सकते हो. तो डिपेंड्स ऑन योर व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, इट विल यू कैन fetch the data into your CRM or any marketing tool. Correct. So Deep, So I this would is like to similar add to here. the case with. Yeah, Deep, I would like to add because I was just looking at the Power Chat also. So this is a kind of functionality which is providing by a lot of I would say WhatsApp automation vendors, right? So what you Hmm. asking is a very valid point कि ठीक है मेरे पास डेटा तो आ गया, उस डेटा को सॉर्ट आउट करके मेरे को बल्क मैसेजिंग करना है, उस पे ऑटो बोट Hmm. लगाने हैं, Hmm. राइट, AI एजेंट Hmm. लगाने हैं, Hmm. सो दैट मेरे पास एक फिल्टर्ड Hmm. डेटा आ जाए. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, है ना? सो Exactly. And our number doesn't get banned. करेक्ट. सो Number doesn't बेसिकली get क्या blocked out. नंबर ऐसा देखिए, नंबर का तो आई एम टेलिंग यू, जब भी आप कुछ भी मेलिशियस एक्टिविटी करेंगे या फिर जो स्पैमिंग करेंगे, तो बेसिकली ये भी एक स्पैमिंग ही हुआ. एक साथ आपने 5,000 लोगों को मैसेज भेज दिया, तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्पैमिंग. तो वो चांसेस है कि वो आएगा पकड़ में. कई बार क्या होता है वो नहीं आता है पकड़ में बिकॉज यू आर यूजिंग मल्टीपल आईपीज, मल्टीपल नंबर्स. तो वो एक Hmm. एक Hmm. अकाउंट से 5,000 ना बेच के 500 10 अकाउंट से भेज देते हैं, राइट, या फिर 20 Exactly. अकाउंट. Virtual number. ऑफिशियल API यूज करेंगे तो वो वाला चैलेंज भी नहीं आएगा, है ना? बट उसमें पर मैसेज का होता है, आई थिंक के आसपास है. So I am also evaluating with Lean Plus integration for the same, and we also got some cost. So what we were thinking that we should give some functionality to the agent itself, where they can purchase the official WhatsApp API for their particular thing, and it will be relinked. Like जो integration होगा वो आपका back to our CRM होगा. Then you can do this activity. We are already exploring that part, Deep, for your reference. Sounds good. Actually, in fact, if eXp can just basically bring in their own expertise and get us a good package for such a transaction, if we go out as individual agents and individual customers, obviously we'll get an expensive package. But if eXp can bring us a collateral, I mean, an affordable package, or like if maybe 20 or 50 agents want to take up that package, maybe we can get a good deal also on these softwares. No, great. So I think any other question? I can see one question. Hello, Kumar. Do you think technology is replacing the personal touch in real estate transaction, or is it enhancing the relationship between agent and client? I think the option two, which is enhancing the relationship, not replacing, because technology, however it is, whatever it is, can't replace the human touch. Okay, it is only enhancing. लोगों को भूल जाते हैं, तो it is only thing which keep us into a good relation. हम connect रहते हैं, and then whenever the need is, we come to know. नहीं तो फिर वो कार का एक मैंने बुक एग्जांपल दिया, बुक तो हर बार उसने 33 कार अलग अलग सेल्समैन से खरीदी, तो वो हमारे साथ नहीं होगा इफ वी स्टार्ट यूजिंग द टेक्नोलॉजी. बिकॉज एक बार कस्टमर आया, उससे कनेक्शन बना हुआ है, रिलेशनशिप बना हुआ है, देन स्टिल उसके बाद 2 साल पार होते तो दे विल रीच टू अस इफ यू आर इनटू connect with him. तो इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ सर. देयर इज अ केस स्टडी व्हिच हैज बीन टॉट इन, इट्स अबाउट मर्सिडीज मार्केटिंग, राइट, एंड कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर, आई वुड से, retargeting. So this is kind of taught in ISB in one of the session by a very famous professor, and I'm sharing because one of my friend who actually graduated from ISB, he shared with me. तो मर्सिडीज ने क्या किया, एंड आई एम टेलिंग यू मर्सिडीज हैज द हाईएस्ट लॉयल्टी इन इंडिया. इफ आई एम टेलिंग यू, अगर आप बाकी किसी कार कंपैरिजन करोगे, ऑटोमोबाइल का कंपेयर करेंगे, तो द पर्सन हु इज ड्राइविंग मर्सिडीज, द चांसेस इज ही नेवर गोइंग टू ड्राइव एनी अदर कार. ठीक है, दो मर्सिडीज इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस. It is the having not made for or not built for Indian roads, in according to Indian roads. The fuel consumption is again, mileage is not good. So despite of all these things, there's a class, right, there's a bench, Mercedes bench angle, and that's why people wants to own it. तो what he told me and what he has shared कि मर्सिडीज ने क्या किया अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, तो चाहे उनका बर्थडे है, चाहे उनका एनिवर्सरी है, राइट, तो वंस यू बाय अ मर्सिडीज, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ओन मर्सिडीज इन दिस रूम, बट अगर आप जीतते हो तो वो आपकी पूरी डिटेल, कितने बच्चे हैं, आपकी वाइफ की बर्थ डेट, आपके एनिवर्सरी, तो दे जस्ट नॉट सेल यू अ कार, दे बिल्ड अ रिलेशनशिप एंड देन दे नर्चर दैट रिलेशनशिप. वो आपको अपने इवेंट्स के अंदर इनवाइट करेंगे, चाहे वो नई गाड़ी का लॉन्च कर रहे हैं, एक आपको फ्री ट्रायल देंगे, जो भी नई गाड़ी आएगी, चाहे आपको चाहिए भी, ठीक है, तो भी आपको देते हैं. एंड देन दे इनवाइट यू, योर फैमिली, दे सेंड यू सम केक्स,
or right now, in this scenario, they send you the newsletters of their particular, what is happening at the company. And Mercedes will keep on engaging with this customer. So technology can help you in terms of increase the level of engagement. आप ऑटोमेट कर सकते हो, आप एक रिमाइंडर डाल सकते हो, आप कुछ पोस्ट भेज सकते हो, आप एक कंपैरिजन भेज सकते हो. लेट्स से I don't know how many of you have done that, and just again sharing a tip, Kumar, and for you also, for all the agents, आप Yeah, कोशिश sure. करो जिस भी क्लाइंट को आपने घर बेचा है ना 2 साल पहले, जस्ट उसको एक कंपैरिजन बना, प्रॉपर्टी आपने 2 साल पहले खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू ये बन गई है. ठीक है. सो बेसिक वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो, बट अगर आप क्लाइंट को ये भेजोगे कि सर योर प्रॉपर्टी हैज अप्रिशिएटेड बाय दिस प्राइस, दिस इज द रीसेंट ट्रांजेक्शन हैपन दिस मार्केट एंड अदर डेवलपर्स आर कोटिंग एट दिस प्राइस, दैट क्लाइंट विल बी सो हैप्पी टू नो कि आपने उसको एक अच्छी चीज दिलाई है, अच्छी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करी है, राइट. अगर आप ऐसे एंगेजमेंट करोगे क्लाइंट के साथ, मोर एंड मोर चांसेस आर कि वो वापस आप ही के पास आएगा और आगे क्या मैं आपके साथ दूसरा या फिर मेरा कोई फ्रेंड है. सो दीज आर इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी, हाउ यू कैन बिल्ड द रिलेशनशिप, हाउ यू कैन नर्चर द रिलेशनशिप. गौरव, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, एब्सोल्युटली यू आर राइट. ओके, अगर कस्टमर को हम इंसाइट देते हैं कि उसका ये बेनिफिट हो रहा है, और वट एवर इफ ही इज फेसिंग सम इशू एंड वी आर हेल्पिंग देम, सो दे विल बी कनेक्टेड विद अस, है ना. And being worked with Tata in my IT career, I worked with Tata for almost 19 years. So we have seen many big customer going to some other competitor because वो 3 महीने फ्री दे रहा है और प्राइस उसका 50% कम है, and coming back to us only because of this service, because what service as a Tata we were giving, वहाँ पे वो सर्विस नहीं मिल पा रहा था. तो सर्विस इज समथिंग जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे सर्विस देंगे ना, तो बिल्कुल वो कस्टमर हमारे पास वापस आता है. एंड जैसा शशांक जी ने बोला, इवन आई एम डूइंग दिस एंड दैट्स हाउ पीपल आर स्टिल कनेक्टेड विद मी ऑल्सो, जिन्होंने भी अभी तक लिया था, और जब भी उनको मेरे को बताते हैं, और फॉर श्योर वहाँ से भी कुछ अच्छा रिपीट कस्टमर भी हमारे को मिल जाएंगे. थैंक यू शशांक जी. Yeah, I have a question, Shashank ji and Kumar ji. Hello. हाँ, बोलिए ना. Actually, I have registered from Kolkata region. After few months, what I have experienced is this is very tough to do something at Kolkata. So I want to change my location. This is point number 1. And point number 2 is how best we can utilize the ecosystem. Means to close a deal, I need, as I cannot go physically to the location, so I want some friends from our EXP who can take the half part and I will complete the half part of a total deal. That means I will, for a particular project, I will complete till the site visit, and from that part someone will take the closer. So that means for a closer, 2 persons are involved. So I want to be the front end and the back end would be someone else. So in this mode I want to work. So can it be possible? Because the second part I am not technically sound and I may not do. This is my doubt. Suppose I am working for Hyderabad region. So Hyderabad city. So for a particular project, for a particular project where EXP is there, everything satisfying, following EXP's rules. So I gathered and finalized the site visit for the customer. And from that point onwards, my EXP friend will take it and complete the deal. Then as per EXP's rule, that would be, shared and everything. So in this mode, I can do the business. So definitely you can do that, and I would like to take this question, Shashank, this side. So for the first question, what you ask to change the city to do business, it's up to personally, it's up to you, sir. But I won't recommend that, because the market, where you grew up, where is the market, and Kolkata is a very flourishing market, right? All you need to do, I don't know whether you have attended the morning meeting or not, but you need to attend the niche where you want to work. Like for example, you wanted to work on a primary project, from the second question what I understood. And second suggestion what you have suggested is totally appreciated.
So you need a closing guy because your expertise is not closing and negotiation. And sir, that's one of the reason why we are doing these sessions, so that you should learn a little bit about it. ठीक है, कोई भी काम आप नहीं करते हो तब तक वो थोड़ा आपको कठिन लगता है, right? It is difficult once you start doing it, but the moment you try it, and then you will feel a success. So just for example, like Kumar, he was a little kind of nervous today before getting into the presentation. But Kumar, how do you feel today after delivering the session? So how do you Yes. like it? Because I enjoyed the session. What's your feeling? So if you enjoyed and people are still with this session and connected, तो इससे लग रहा है कि शायद हमने अच्छा डिलीवर किया है. So हाँ, करने के पहले तो काफी डर था. Very similar to coming to real estate, है ना? But I think सोमेन जी, मेरे ख्याल से आपको शायद हेल्थ चैलेंज की वजह से आप फील्ड पे नहीं जाने के लिए थोड़ा वो कर रहे हो ना? हाँ, That was the issue, what I understand. you were right. So शशांक जी, जस्ट टू ऐड, अगर ऐसा भी केस है ना, तो जैसे धीरज ने किया था पुणे से यूएस में, ही वाज नॉट डूइंग द लेग वर्क वाज डन बाय सम अदर पीपल. तो EXP इज ऑलरेडी गिविंग दिस रेफरल मॉडल वेयर इन नॉट ओनली इन हैदराबाद, आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हो. आई थिंक शशांक जी विल बी द लास्ट राइट पर्सन टू आंसर दिस, बट माय अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस इज दिस वन. थैंक यू शशांक जी. 100% करेक्ट है आप, जैसे अभी आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया. एंड इनफैक्ट नॉट धीरज, आई थिंक अदर एजेंट्स आल्सो आर देयर. एंड गाइस, आई डोंट सी, अगर आप 50% स्प्लिट करने के लिए तैयार हो और आपको एक क्वालिफाइड क्लाइंट किसी को दे रहे हो, तो ही विल नॉट वर्क. So because everyone wants to make money, if you are getting and bringing value in the transaction, definitely. And EXP is all about collaboration, sir. चाहे वो आप डोमेस्टिक की बात करो, चाहे इंटरनेशनल की बात करो. बट अगेन मैं आपसे बोलूंगा, आपको एक माइक्रो मार्केट पकड़ना चाहिए, आपको एक सिटी पकड़ना चाहिए, एक प्रोजेक्ट पकड़ना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए. Because running around here and there can get you, nothing. Yes, Shashank ji, just I'm telling, actually, I am from Kolkata, but staying 20 years at Hyderabad. So Hyderabad, I can take as my, focus city. That is why I understand your point. So, but as Kolkata is not the area where I should work, I will tell, because I have spent time and it was totally failure for me. But so as I know Hyderabad and I am staying there also, so I want to shift my focus in Hyderabad. That is, I am telling. But I have registered as a Kolkata, so that is one of the regulatory thing from your side, because my first tenure of, a significant period over here. Actually, we put a lot of effort here, but I could not do. So I am not going into various reasons. But the fact is, time, effort, and money I have spent. So I don't want to concentrate here at Kolkata now. I want to shift my focus at Hyderabad. That was for the past questions. So that is I am saying, because I came here as under Ajay ji. So Ji. Kolkata was my city. So now I Okay. want to change it to Hyderabad. That is my point. Sir, totally get your point, and I think EXP has licenses in 16 states, so you are 100% allowed to work in Hyderabad, Great. and Great. you can actually collaborate with one or two good agents in Hyderabad to start working in this model. Fantastic. Yeah, definitely. I will be sharing this thing 50% or whatever you have mentioned there for closing the deals. Definitely. Okay. So, Okay. guys, if you also enjoyed the session, I think a big shout out for our trainer today, Kumar Gaurav ji. Thank you so much, Kumar, for your time. What बड़ा to अच्छा लगा say, आपका Kumar session. ji is always our favorite speaker, and Shashank ji, Kumar ji, 1000 session ले चुके हैं अब तक, तो how can Kumar ji will be hesitating taking sessions? This is पहला very लिया है much कुमार जी. anyway. Great. So, Very sir, good. a big Thank you, shout out, Kumar ji. guys. Give a big thumbs up. You can send the emojis. You can also chat and put in the chat. आपको session कैसा लगा? And look forward for tomorrow's session. Tomorrow morning, 10 a.m. We have a very powerful, energetic person who's going to join, and who has actually generated a revenue of close to, Nawaz. What is the revenue as on date for Rashid? Sir, it's crossed 75 lakhs. Okay, so close to 75 lakhs in last 5 months. So amazing journey. So stay tuned. Join us. He will talk about lead generation. He talk about how he is able to close transactions, how he is able to achieve those numbers in just 5 months.
So Rashid will be joining us in the morning. So stay tuned, guys. Look forward to meeting you all. You guys have a lovely evening. I can see a lot of comments. Great. Congratulations. Thank you so much, Kumar ji. And I'm Thank super you. excited for this week because this is something which we have started first. बट माई आइडिया इज कि हम सब में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हम सब में कुछ लीडर्स हैं, एंड हमें वो क्वालिटीज़ एक दूसरे से सीखनी चाहिए. And this was the whole agenda of having this agent-led session. I can see a lot of agents who are joining from non eXp, so this is open for all. You just need to send them the registration link, and you can invite your fellow agents. Not necessarily they should join eXp. That's not the intention. We are changing. We are trying to give some values. और अगर आपको लगता है कोई फ्रेंड है आपका जो EXP को दिखाना चाहिए कि EXP में क्या मिलता है, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो दिस सेशन. So that could be again, a great thing. So I'm super excited for tomorrow's session with Rashid, because I also wanted to know the secret how he's able to close 75 lakh rupees in revenue in just 5 months. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you, Thank you, everyone. XP, for Thank you. giving me